So good morning class. Yesterday we were doing the topic of corporate governance, in which we have understood that what is the corporate governance. Just having the glance on that, the definition we have studied yesterday. The corporate governance is the application of best management practices, compliance of law in true manner and spirit, and adherence to ethical standards for the effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable growth of all the stakeholders. So, effective management of relationship will related to the stakeholders. Here are shareholders, managers, board of directors, employees, customers, creditors, suppliers, and community. We need corporate of governance for the better access of the external finance, for making the cost of capital low, to improve company performance, to increase the firm's value, and to reduce the corporate risk and scandals. We had also studied the principle of corporate governance, in which the first principle was having the sustainable growth and development for all the stakeholders. Second was effective management and distribution of the wealth to all the stakeholders. Then to discharge of social responsibility, that's the responsibility towards the society, towards the community. The application of the best management practices, so that we can have the excellence and achieve the economies of scale. We can get the best from all the resources at the lower cost. Compliance of all the rules and regulations, and adherence of all the ethical standards prescribed by the government. Now coming to the today's topic, there are the four pillars of the corporate governance. Number one is accountability, number two is fairness, number three is transparency, and number four is independence. So accountability, whenever we say the person is accountable, that means they are responsible and he will be answerable for the doing. So corporate governance is saying that whatever the company is doing, whatever the decisions have been taken by the company is relation to the manufacturing, production, any processes, any financial implications, loans, etc. The management will be accountable to the board of directors. So management will be responsible and answerable to the board of directors, and these board of directors are answerable to the shareholders, as the shareholders had invested their money in the company. Then second things come the fairness. That means whatever being done in the company, we need to protect the shareholders right. अब shareholders right की बात यहाँ क्यों उठती है? जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कंपनी कुछ ऐसी पॉलिसी करने वाली है जिससे कि शेयर मार्केट में शेयर के प्राइसेस बढ़ सकते हैं. अगर ये इंफॉर्मेशन पहले ही बाहर आ जाए तो might be there can be people who can manipulate the market and maybe harm the existing shareholders. For example, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं लेकिन मार्केट ये बात जिसको पता चली से मैनिपुलेट करके ऐसे कहते हैं कि प्राइसेस गिरने वाले हैं और कंपनी डूबने वाली है, तो व्हाट द पीपल विल डू, दे विल सेल द शेयर एट द लोअर कॉस्ट. जैसी पॉलिसीज हो गई, प्रोजेक्ट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, शेयर के प्राइस हाई हो गए, नाउ दे विल सेल शेयर एट द हायर प्राइस. तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनके राइट्स मारे जाते हैं, उसके अंदर उनके पास से वो शेयर चले गए क्योंकि किसी ने अंदर की इंफॉर्मेशन पास ऑन करके मार्केट को मैनिपुलेट किया है. So these kind of things should not be there in the share market. So we need to protect all sort of shareholders right. Second, we need to treat all kinds of shareholders equally, चाहे वो हमारे किसी भी टाइप के शेयर होल्डर हो. शेयर होल्डिंग इज ऑफ वेरियस टाइप्स, यू मस्ट हैव learn in the finance chapter. Then provide effective redressal for the any kind of violations. अगर कोई भी violations किसी भी फॉर्म में हो रहा है तो उसका proper redressal mechanism होना चाहिए and results निकलने चाहिए justifiable. Then next pillar is transparency. That means we need to ensure timely, accurate disclosure of all the materials. ऐसा नहीं है कि 2 साल पुरानी बैलेंस शीट के बारे में हम आज बता रहे हैं, नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स पे या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे आनी चाहिए वो आपको टाइमली ही दिखानी होंगी, बतानी होंगी. तो कोई भी मटेरियल मैटर है, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है, कोई परफॉर्मेंस है, किसी भी तरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, दैट नीड टू बी सर्कुलेटेड टू ऑल द स्टेक होल्डर्स टाइमली. Then independence. Procedure and structure are in place so as to minimize or avoid complete conflicts of the interest. ऐसा नहीं है जो बंदा जैसे सोच रहा है उस तरह से काम कर रहा है. If there is a set design procedure, set design structure,
तो x के बाद y आए, y के बाद z आए, पर सबको उसी प्रोसेस उसी स्ट्रक्चर से काम करना पड़ेगा. There cannot be no personal biasness and they have to follow the regulations, rules, guidelines made in the organization structure, and these guidelines, these procedures, these structures will be designed in such a manner so that it should be in the benefit of the organization. Although there will be independent directors and advisors, that is a free, they are free from influence. देखो डायरेक्टर्स को कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके, किसी एडवाइजर को, मैनेजमेंट को कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर होना चाहिए, क्योंकि उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है कि आप इस तरह की चीजें की डिसीजन ऐसे लो या इस तरह से काम कर लो या इस तरह की इन्फॉर्मेशन मत शेयर करो एक्सेट्रा. तो हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और एडवाइजर्स रहते हैं. इनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है, बिकॉज दे आर नॉट ओनिंग दी मनी इन दी कंपनी, दे आर जस्ट एडवाइजर्स. तो उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उन्हें कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं कर पाता है. Then elements of corporate governance: one is good board practices, second control environment, third transparent disclosure, fourth well defined shareholder rights, fifth board commitment. Coming one by one. गुड बोर्ड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? जितने भी रोल्स एंड अथॉरिटीज या रेगुलेशंस हैं या ड्यूटीज हैं, सब कुछ बहुत ही क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए. डायरेक्टर्स को पता होना चाहिए, दे शुड बी रियली क्लियर अबाउट देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज द डायरेक्टर्स, एंड बोर्ड शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिफाइंड, एंड इट शुड बी inform to everyone that what are the hierarchy in the board. देन अप्रोप्रिएट कंपोजिशन होना चाहिए. स्किल्स ऐसा नहीं है सारे टेक्निकल बिठा दिए या सारे फाइनेंस की बिठा दिए या सारे एचआर के बिठाते, तो कंपोजिशन स्किल्स होंगे तभी इन दी क्रिटिकल सिचुएशन, द स्ट्रेटेजिक मेकिंग, there will be the better input from each one and we will get the best decision out of those inputs. Then good board procedure का मतलब क्या है? There should be appropriate techniques, procedures, methods laid down which need to be followed by every board members. डायरेक्टर रेम्यूनरेशन शुड बी इन लाइन विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस. ऐसा नहीं है कि उसको कुछ भी दे दिया है या कुछ ज्यादा ही दे दिया है या कुछ कम दे दिया है. दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द इंडस्ट्री. देन बोर्ड सेल्फ इवैल्यूएशन एंड ट्रेनिंग शुड बी कंडक्टेड रेगुलरली. Third comes your control environment. That means internal control procedures should be framed, should be watched, audited and maintained. Then risk management framework should be there in the organization. डिजास्टर अगर कुछ हो रहा है तो डिजास्टर रिकवरी सिस्टम मैनेजमेंट में फर्म में ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, सो दैट in the time of disaster we are not running behind it how to recover it and we are losing more money and more resources. Then media management technique should be appropriate in a manner that we that in how which manner we need to use this media. Then control environment also includes your business continuity procedure in place, independent external auditor which will conduct the audit for each department time to time and give its reports unbiased, so that there must be the improvement in the processes. Independent audit committee should be established for this purpose. The internal audit function can be there बिफोर द एक्सटर्नल ऑडिट, ताकि बाहर का बंदा आके पहले बताए, उससे पहले हम खुद चेक कर लें इंटरनली ऑडिट करके कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं एंड वेयर वी नीड टू मैनेज इट एंड हैंडल इट. Then management information system should be appropriate, managed and established. Compliance function should be there in the organization. When we come to the transparent disclosure, the financial information should be disclosed timely. Non-financial information should be disclosed timely, and financial prepared according to the international financial reporting standards and not about the any other standards. Companies registry fillings must be there up to date. High quality annual report of the company should be published every year, and all the disclosure should be made on the official websites. शेयर होल्डर के राइट्स के बारे में बात करें तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर राइट शुड बी फॉर्मलाइज्ड. वेल ऑर्गेनाइज्ड शेयर होल्डर मीटिंग शुड बी कंडक्टेड. Policies on the related party transaction should be framed. Policies on extraordinary transactions should be framed, and clearly defined and explicit dividend policy should be there and should be informed to all the shareholders. Board commitment. The board discusses corporate governance issue and has created a corporate governance committee. The company should have a corporate governance champion. The corporate governance
improvement plan should be created and appropriate resources are committed for the corporate governance initiative. देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब तक बोर्ड से नहीं आएगा, मैनेजमेंट सपोर्ट से नहीं आएगा, तब तक हम उसे पॉसिबल ही नहीं कर सकते कि ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते. Then policy and procedures should be formalized and distributed to the all the staff. Corporate governance code should be developed and should be communicated to all the people. Code of ethics should be developed and communicated to all the people. And the company is recognized as should be recognized as a corporate governance leader. अदर एंटिटीज की अगर बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आल्सो अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट जस्ट कंपनीज की प्राइवेट सेक्टर की. किसमें आ सकती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? एनजीओ, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पेंशन फंड, स्टेट ओन एंटरप्राइज एक्सेट्रा. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वन थिंग बिकॉज इट इज टेलिंग गाइडिंग टेक्निक्स हैं ये में कि कैसे हम स्टीयर करें गवर्नमेंट सॉरी कॉर्पोरेट को, कैसे हम कौन सी मैनेजमेंट टेक्निक्स से टूल्स हैं, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी है, किस तरह से हम सारे स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के बारे में सोच के वी शुड डिसाइड ऑल दी पॉलिसी. दैट इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो एनजीओ के भी स्टेक होल्डर है, स्कूल्स के भी स्टेक होल्डर है, हॉस्पिटल्स के भी स्टेक होल्डर है. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे ही एप्लीकेबल होगा, इट भी और कंपनीज पे ही एप्लीकेबल होगा, इट कैन बी एप्लीकेबल एनीवेयर. So with this we end this chapter now for the corporate governance.